Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 24th of September. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to Arunachal Pradesh and Tripura. Then CAG, they have released the State Finance 22-23 report. Then Bhupendra Yadav ji has presided over the 51st Foundation Day of CPCB in Delhi. Then we will be talking about a MOU that has been signed for Stitched Ship Project INSV Conindia. All these things and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. If you are new here, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs first. Prime Minister Narendra Modi has recently visited Arunachal Pradesh and Tripura on 22nd of September, where he led the foundation stone and inaugurated multiple development projects worth 5100 crore rupees. The focus here of the projects were on infrastructure development, economic growth, then cultural preservation, and many more. Specifically, if we talk about Arunachal Pradesh, here you can see hydro projects has been laid, and the projects for, or we can say hydropower projects foundation stone was laid for two major hydropower projects worth 3,700 crore rupees in Itanagar. Both these projects are being jointly developed by Arunachal Pradesh government and Northeastern Electric Power Corporation Limited on the Yarjep River. Take a note of this. Which are these projects? It is your Hio Hydro Electric project, and second is your Tato 1 Hydro Electric project. This Hio Hydro Electric project, it is of 240 megawatt capacity, and Tato 1, it is of 186 megawatt of capacity. Right? Then apart from this, remember a Twang Convention Center. Twang Convention Center. This was also the foundation stone for this was laid down by Prime Minister Narendra Modi in Twang, Arunachal Pradesh, and it has a capacity to host almost 1500 delegates. Right, this will promote tourism and cultural heritage, right, to host national and international conferences. So this is for Arunachal Pradesh. Now let's talk about his visit to Tripura. There he inaugurated Tripura Sundari Temple. Right, I repeat, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redevelopment of Tripura Sundari Temple at Udaipur in Gomti, Tripura, and it is under the Prasad scheme. This is a 524-year-old temple. First thing, remember this here. Correct? So these are some things that you need to remember, and the redevelopment cost here will be almost 54 crore rupees here. Right, students, take a note of this. If we talk about Arunachal Pradesh, who is the Chief Minister here? Pema Khanduji. Right, and here only Namdhapa National Park is located. Namdhapa National Park is located. And what is the capital of Arunachal Pradesh? It is Itanagar. Moving on, students. Next is CAG, Comptroller and Auditor General of India, has recently released the State Finance 22-23 report, and it stated that 16 states with revenue surplus recorded here. Right, means the amount of money they collected through the taxes from GST or other investments, right, it is more as compared to the money that they are spending in their particular state. Right, so first, if we talk about the revenue highlights here, we are talking about the state's own tax revenue constituted 48%, union taxes constituted 27%, central government constituted 17% here of revenue receipts, and state non-revenue constituted 7.8% of revenue receipts.
Correct. So first thing, just have a basic idea of it. Then multiple, if you remember that in India we are seeing multiple grants are being given by various state governments. So it has been also taken into consideration, and it stated that the total finance commission grants under various categories, under various schemes for health sector was 1,72,849 crore rupees, right? And the largest share of the total, about 50%, was revenue deficit grants, right? So apart from this here, just take a note of this: total receipts here, then grants this much, total debt this much, revenue surplus 16 states and UP Uttar Pradesh has secured the top position. We will be discussing it. Then revenue deficit 12 states with Andhra Pradesh in the highest position, right? Here you can see, if we are talking about revenue surplus, it is Uttar Pradesh that is revenue surplus here, right? The state that is having the revenue surplus, it is which state? It is Uttar Pradesh, right? And if we talk about state that is having the deficit, which is it? It is Andhra Pradesh, correct? Take a note of that also. Question will be asked that state with deficit and state with revenue surplus. So it is Uttar Pradesh. Here UP leads the list with a revenue surplus of 37,000 crore rupees in FY23, followed by Gujarat, then Odisha, then Jharkhand and Karnataka, right? And if we talk about northeastern states, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim also figure among the surplus states here, right? Then if we talk about revenue deficit, a total of 12 deficit states were recorded here, and 90 to 100% of revenue deficit are of Bihar, Kerala, Meghalaya and Maharashtra. Then 80 to 90% Assam, Haryana, Madhya Pradesh, so and so, and 78 to 80% it is Andhra Pradesh and Punjab. All these report was released by whom? They were released by the Comptroller and Auditor General of India. Who is the Comptroller and Auditor General of India? K. Sanjay Murthy. K. Sanjay Murthy. Take a note of this. Headquartered in New Delhi, established in 1858. Next students, next is Union Minister Bhupendra Yadav ji has presided over the 51st Foundation Day of CPCB in New Delhi. What is CPCB? Central Pollution Control Board. This was held at the Parivesh Bhavan in New Delhi. It is the 51st Foundation Day. First of all, this is the question that can be asked, that which Foundation Day was observed of CPCB? It is 51st. Where was it held? Location, the event for which? At Parivesh Bhavan in New Delhi. It was presided by, over whom? It was presided by Bhupendra Yadav ji, right? And during this, Samir 2.0 application was launched. 2 regional labs were launched. CPCB new building was, or the for the foundation stone for the new building of CPCB was also laid down here. Correct? Take a note of this. If we talk about this Samir application, what is this about? This is the upgraded version, right? And it is for monitoring air quality for and for this Samir application, it is available for both Android as well as for iOS, and it has as it is a second version of this Samir application, it is a improved version. It has a better interface, right? And also location based services are also provided here, right students? So take a note of this. Moving on, next is Ministry of Defence and Ministry of Culture. They together signed Memorandum of Understanding for Stitched Ship Project INSV Kondinya, right? Kondinya, right? That is Kondinya, right? What is this? So first of all, remember the MOU has been signed between which two organizations? It is Ministry of Defence and Ministry of Culture, right? This MOU is for the Stitched Ship Project INSV, Indian Naval Sailing Vessel Kondinya, right? It is to revive India's ancient maritime craftsmanship and create its seafaring heritage. We discussed this question few time back also, students, right? And here this INSV Kondinya, right? It will be a traditional wooden ship that will be built without welding or reverting, right? So it will be a wooden ship. You must have seen in the older movies also, right? The ships, they used to be of wood, right? There was no welding at that time, correct? So similar kind of tradition to bring that back and to bring this stitched ship INSV Kondinya, right? This MOU has been signed. Moving on, next is Ministry of Tribal Affairs and UN. They have launched Adi Yuva Fellowship and Adi Karam Yogi Volunteers Program. I repeat, Ministry of Tribal Affairs, they have partnered with United Nations in India and has launched Adi Yuva Fellowship and the Adi Karam Yogi Volunteers Program under the Adi Karam Yogi Abhiyan. That is a flagship initiative envisioned as the world's largest tribal grassroots leadership movement,
right? This will be empowering the tribal youths across India. The duration of this initiative will be of 12 months, right? Take a note of this, important. And it is Ministry of Tribal Affairs that has partnered with United Nations to empower the tribal youths, and this is initiatives for the next 12 months. The first batch here will be of 16 fellows that will be selected and placed with the United Nations agencies at the national, state and district level. Correct. And if we talk about Adi Karam Yogi Volunteers Program, this is supported by United Nations Population Fund, and it has deployed 82 volunteers in 13 districts of Madhya Pradesh and Rajasthan for 2 months so far. This will be supporting the village vision of 2030 planning. Moving on. Next is ICAR, that is your Indian Council of Agriculture Research under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. They have launched the second edition of Multi-Agency Agritech Innovation and Technology Research Incubation, that is METRI, a Brazil-India cross-incubation program in New Delhi. Right? Who launched it? Launched by ICAR. What was launched? METRI 2.0 was launched here. What is the purpose of it? It is to foster India and Brazil collaboration in agriculture using technology, right? We know that in today's world with in the agriculture sector, satellites are playing a major role because they provide data. Then UAVs, that are your unmanned aerial vehicle or your drones, they are very beneficial for the monitoring of the crops as well as for spraying various pesticides, spraying water and many more, right? Then this satellite data gives an insight to the farmers about when they need to provide crops the proper nutrients or many other data, right? Even when they need to sow the crop, right? And when they need to harvest the crop, all that data can be provided, and with the help of AI this analysis becomes more meaningful. Correct, students? So this is the second edition. First edition was launched in 2019 and this is the second edition of METRI 2.0 or METRI initiative. This will enhance the agriculture innovation with the help of technology between India and Brazil. Next is International Affairs. 2025 edition of CSAR was held in South Africa in Pretoria. Right? So which is this what is this CSAR? It is your Chief Science Advisors Roundtable. This is the 2025th edition of this Chief Science Advisors Roundtable held under the South Africa's G20 presidency, held in Pretoria in South Africa from 21st to 22nd of September. This was a 2-day long conference held under the theme Equity-Based Science, Technology and Innovation for Inclusive Human Development and Global Sustainability. And here the Indian delegation was led by whom? This question can be asked. That is, Indian delegation was led by whom? It was led by Professor Ajay Kumar Sood. Right? Take a note of this, students. Moving on. Here you can see all things, right? 2025 Chief Science Advisors Roundtable conveyed under South Africa, where in Pretoria, South Africa. This is the theme here. It was launched in 2023. Participating nations are 17 here, which includes India. And the Indian delegation was led by Professor Ajay Kumar Sood. Moving on. Next is CSIR's arm, National Institute of Science Communication and Policy Research. They virtually participated in the Science Summit 2025 that was held at the 80th United Nations General Assembly in New York, USA. I repeat, students, recently CSIR's arm, that is National Institute of Science Communication and Policy Research, they participated in the Science Summit that was at the 80th edition of United Nations General Assembly that was held in New York, USA. Right? This summit was held on the theme Women and Girls in Science, Driving Gender Inclusive Innovation, Gender Equality and Breaking Barriers, with CSIR serving as the case study. Right? So basically, as the name you can see, focus was on science. Focus was on promoting women in science and technology, specifically in the STEM courses. Right? And here if we see India's NSI CSPR, they participated here, and here first session chair was Dr. Ranjana Agarwal, second session chair was Dr. Akhilesh Gupta, and here focus was on globally women constitute about 35% of the STEM professionals. And as I mentioned, the main focus here of this initiative was, or this conference was, that the participation of women and girls in STEM
increases. Right? Next is banking and finance. RBI has cancelled the registration certificate of Datta Finance and Trading. I repeat, RBI they cancelled the certificate of registration of Datta Finance and Trading Private Limited, NBFC, due to their irregular lending process. Correct? Here the apps that were involved were KinCash, Dolon, Zestcash. So they all will be stopping now. Next is Bank of Baroda. They have launched e-rupee P2P digital gifting on Bob ePay UPI. See, what is this P2P? It is your peer-to-peer lending. Correct? And here P2P digital gifting feature has been brought here, in which you will be seeing that from 1 rupees to 1 rupees to 10,000 rupees you will be able to provide as a gift card through UPI. Right? Vouchers will be issued. You can just go to the application here, that is your Bob ePay UPI, and there you can buy these vouchers, these gift cards, and you can issue an unlimited number of these vouchers. Right? But it should be coming under the daily UPI limit, and these vouchers value can range from 1 rupees to 10,000, not more than that, but you can multiply them with n number of vouchers that you want to buy. Correct? Here initially this will be available for the food category, and the feature will further expand other services in the phases. Correct? Take a note of this. Very important. So Bank of Baroda, they have launched this e-rupee P2P digital gifting on Bob ePay UPI. Moving on then. Next is Quant Mutual Fund. They have launched India's first SIF with equity long short fund. SIF is your specialized investment fund. So Quant Mutual Fund, managed by Quant Money Managers Limited, they have launched India's first equity long short specialized investment fund named QSIF Equity Long Short Fund. Right? Here the minimum investment starts from 10 lakh rupees, and the NFO period is from 17th of September to 1st of October, and the benchmark here is Nifty 500 Total Return Index. Next is Economy and Business. Ministry of Labour and Employment, they have released the All India CPI, that is your Consumer Price Index value for agriculture and rural labours for the August 2025. Correct? And the base here is 2019. Correct? These indices are based on the data collected from a set of 787 sample villages across 34 states and union territories. Correct? Here if we see about the data here, you can see that the food index, right, rose from 137.07, correct, to how much? Rose to this much in August. Right? Then if we talk about inflation, it is for the, let me give you a better idea. For agriculture labor, it is 136.34. For rural laborers, it is 136.6. Right? This is your CPI level. If we talk about inflation, for agriculture labor it is 1.07%, and for rural laborers it is 1.26%. Correct? Take a note of it. Next is GRSE, that is your Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. They have signed a $62.44 million deal with Carts and Render to build 4 vessels for India. See now students, in today's world you must have seen that India is focusing heavily on the maritime sector. We are focusing on developing the ports of our India so that trade can flourish, so that we can export more, because we know that now manufacturing sector is increasing. We are catering to the in-house demand. Now with that rise in manufacturing, we will be also focusing on exporting of those products. Right? So hence for this you will be seeing that multiple projects in the maritime sector, in the ports, infrastructure development, right, in the sailing vessels, even in the Indian naval ships, you will be seeing multiple projects will be coming. Hence here you see GRSE, they signed this amount with Carts and Render to build 4 vessels. Correct? 4 vessels, 4 hybrid multi-purpose vessels, along with the provision of 2 additional propulsion vessels that will be provided along with this contract. Right? And they will be built at GRSE's Kolkata, West Bengal facility. Take a note of this. Right, students? Next is awards and recognition. 69th edition of the Ballon d'Or was held, and Dembele has won the men's category, whereas Barcelona's Bonmati has won the women's title for the 3rd consecutive year. Very important, students. We are talking about the 69th edition of the Ballon d'Or award. Right? The ceremony took place where in Paris, France. Right? And PSG, that is your Paris Saint-Germain, this is your football club,
their forward player Dembele, right? He has been honored or won the 2025 Ballon d'Or award in the men's category. And on the left here you can see she is Barcelona's Bon Mati. She has won in the women's category, and this is for the third consecutive time that she has won this award. Next is here you can see the respected some other winners. Moving on to appointments and resignation, PESB, that is your Public Enterprise Selection Board panel, recommended B. Sai Ram as the next chairman and managing director of Coal India Limited, that is a Maharatna public sector undertaking under the Ministry of Coal. He will be replacing PM Prasad, who is set to superannuate on 31st of October 2025. Moving on, next, Piramal Enterprise completed the merger with Piramal Finance, right? And here you can see September 23-25 is the record date when PEL shares will cease trading and eligible shareholders will receive PFL shares on one-to-one basis. Next, Zorawar light tank deployed by DRDO and L&T for the Indian Army. This is your Zorawar tank, as you can see it in the picture here, right? This is your Zorawar light tank. It has been developed by the Combat Vehicle Research and Development Establishment of DRDO, right? That is CVRDE, along with the help of L&T. It has been delivered to Indian Army. It weighs 25 tons and can speed up to 70 km per hour. Right, and here it will be a very beneficial for the Indian Army's defense sector, correct? And we will be seeing that it will be inducted into the Indian Army by 2027. Some research work is still some testing is still going on, and then after that we will be seeing that it will be provided to Indian Army. Who is the Chief Executive Officer of L&T? SN Subramaniam, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Next is sports students. Team World, they have clinched the Lever Cup 2025 against Team Europe. See this Lever Cup, it is a tennis event. It is held between the Team World and Team Europe, and this time it is Team World. They have clinched this, or they have won this Lever Cup against Team Europe. It was held from 19th of September to 21st of September in San Francisco, USA. Right? And Team World, this is their third title in 4 years they have won here. Next, important days. World Rose Day observed on 22nd of September. It is to raise awareness about the rose, right? Not just to raise awareness about the rose, but you need to understand this day is for cancer patients, right? And this rose is a symbol here that is denoting the cancer patient. So we observe this day for the welfare of the cancer patients, and this day is observed on 22nd of September, and it honors cancer patients, survivors, caregivers and other people, right? And this rose, why rose? Because you can see or just remember, World Rose Day is observed in the memory of Melinda Rose. She was a 12-year-old Canadian girl diagnosed with a rare blood cancer, right? In 1996 she passed away. Next, World Rhino Day observed on 22nd of September, and it is to raise awareness and to raise awareness about preserving the rhinos, right, and for their conservation, right? It is saying they are some critically endangered species. There are only 5 rhinos left, 2 in Africa, 3 in Asia, and fewer than 70 Javan rhinos are remaining. The 5 rhinos that I'm talking about, that are your black and white species that are remaining, right? Very few rhinos are remaining, and in order to conserve them, this day is observed. For a World Rhino Day was first observed in 2010. Next, World Car Free Day observed on 22nd of September, students. This day is observed to basically observe or to create awareness about cars that create a lot of pollution. Hence, we should avoid using cars for even small locations. To promote sustainable and clean mobility, such as your cycle, they are considered clean source of mobility, right? They do not create any pollution even, but they are also help in the health of an individual, right? Because when you will be cycling, it helps you lose weight, it helps you to burn calories, it is beneficial for us, right? It helps in the movement, so it is a kind of an exercise only. So World Car Free Day observed on 22nd of September, first time observed in Europe in 1999. And European Mobility Week, if asked, it is from 16th to 22nd of September we observe this week. Then next, Justice Pawan Kumar Bhimappa has been appointed as the Chief Justice of Patna High Court, right? Take a note of this. And the oath administered by the Bihar's Governor Arif Mohammad
Khan at a ceremony that was held in Raj Bhavan in Patna, Bihar. He will be succeeding Justice Vipul Manubhai Pancholi, who was elevated to Supreme Court on 29th of August 2025. So that's all for the day, students. Now it's time for us to move to the revision part that is quite beneficial for you all. So do watch this revision part on daily basis, students. It is very important. Name the company that signed a technology transfer agreement in September with ISRO, that is an Indian National Space Promotion and Authorization Center, and NSIL for small satellite launch vehicle to promote MSMEs and startups in India. Which is this organization we are talking about? It is Hindustan Aeronautics Limited. This small satellite launch vehicle, this is a technology that is used to launch small satellites in orbit. And under this agreement, Hindustan Aeronautics Limited, they will complete a 2-year technology adoption phase followed by a 10-year production period. Next, mention the country with which India signed a memorandum of understanding to leverage the complementaries between the two economies, announced on the sidelines of FICCI Leads that was held in New Delhi in September 2025. So, mention the country with which India signed this MOU. It is Mexico. This MOU will leverage the complementaries between the two economies and explore the opportunities in key sectors such as automobile, auto space, aerospace, agriculture, and medical devices. Next, mention the world's first ever tri-service all-women circumnavigation sailing expedition flagged off by Union Defence Minister Rajnath Singh in September in Mumbai. It is mention the world's first ever tri-service all-women circumnavigation satellite expedition. It is Samudra Pradikshana, right? This all women means here there will be 10 women officers. All service mean they will be from Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force. So here out of the 10, 5 women are from Indian Army, 1 women officer from Indian Navy, and 4 from Indian Air Force. And which will be the vessel used here? That is Indian Army sailing vessel Triveni will be used here, right? Next, mention or name the company that signed a memorandum of understanding with CDAC to accelerate the creation of India's sovereign cloud ecosystem. It is TCS, Tata Consultancy Services. They have partnered with CDAC in order to enhance the cloud infrastructure of India. Next, mark the correct statement regarding the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to Mizoram in September. If we look at the options here, all these 3 are rightly mentioned. Next, Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone for multiple development projects at a total estimated cost around how much during his visit to Manipur in September. So the cost is 8,500 crore rupees. And he laid the foundation stone of multiple development projects worth 1,200 crore rupees in Imphal, Manipur. In this includes your IMA market. That is your IMA means Mother's Market, right? Then a SE zone, IT SEZ zone, that is your special economic zone worth 114 crore rupees also will be established here. Next, which ministry has organized the first ever Gyan Bharatam International Conference on reclaiming India's knowledge legacy through manuscript heritage in September? If we look at the options here, it is Ministry of Culture. Right, take a note of this. This Gyan Bharatam, this was first announced in the Union Budget of 25-26 and formally launched at the Gyan Bharatam International Conference. This flagship national initiative, it is dedicated to preserving, designing, and digitizing and promoting the India's manuscript heritage. So, in order to secure and preserve the manuscripts or Indian manuscripts, this initiative was launched. Next, mention the states that are included under India's annual licensing policy for opium poppy cultivation from 1st of October to 30th of September for crop year 25-26 as announced by the government of India. So this for poppy, initially the farmers of these 3 states, that is Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh, will be benefited here. Next, what is the estimated value of revenue procurements for the year as per the Defence Procurement Manual approved by the Ministry of Defence in September to improve procurement processes and operational readiness of the armed forces? It is 1 lakh crore rupees. Right? This manual will replace the 2009 version in the consultation with the armed forces and stakeholders. With this revenue procurement of 1 lakh crore in FY26, the updated menu ensures transparency, fairness and accountability and will enhance the defense capabilities of India.
Next, who led the Indian delegation at the 44th meeting of the Shanghai Cooperation Organization's Regional Anti-Terrorist Structure Council held in Kyrgyzstan in September? So, who led the Indian delegation here? It was led by T.V. Ravichandran. Take a note of this. Moving on, India participated in the 9th edition of Dash exercise. So, it was the 9th edition of the ZAPAD exercise, that is the Russian-Belarusian joint military exercise held in Russia and Belarus training ground of Belarus. And India participated here. Next, you have to give me the correct statement regarding the Union Education Minister Dharmendra Pradhan's official visit to UAE in September. If we look at the options, all these three options are rightly mentioned. Next, where did the 4th Coast Guard Global Summit held in September, in which the Indian Coast Guard participated, reaffirming India's commitment to strengthening global maritime governance? It is Italy. Right, and this summit was co-chaired by Italy and Japan and was attended by the delegates from 115 countries and international organizations. Right, this was the 4th edition of the Coast Guard Global Summit. The 5th edition of the Coast Guard Global Summit will be hosted by our India, and in India where it will be hosted in Chennai, Tamil Nadu in 2027. Next, pick out the incorrect statement regarding the projects launched by Union Minister Jyotiraditya Scindia ji at the 28th Universal Postal Congress in Dubai, UAE. If we look at the option here, option B and C are right, A is wrong. A is saying that the UPI-UPU integration project, under which India's UPI and in the International Universal Postal Union International Connection Platform together will be used to facilitate the cross-border payments. Is it right? So here remember, it is UPI, UPO integration projects. This is right. I correct myself. We have to find the incorrect statement, right? So here option A is right. Option A is right. Let me write A. Option A is right. B is wrong and C is wrong. We have to find the incorrect, right? So option B and C are wrong. If we look at option B, UPI UPU international project has been developed by Ministry of Finance, NPCI, that is NPCI International Payment Limited, hence NIPL, and International Postal Union. First of all, is the statement correct here? So remember, this is no. It has been developed by the Department of Post under the Ministry of Communication, NIPL, and the UPU. So it is not the Ministry of Finance, it is your Department of Post under the Ministry of Communication. Now option B is right. Now coming to option C, India announced a $20 million commitment to foster innovation in the e-commerce and digital payments at the 28th Universal Postal Congress. So is it so? Is it this $20 million announced commitment? No, it is not $20 million. It is $10 million commitment that has been announced by our India. Next is mark the correct statement regarding the introduction of special relaxations by SEBI for public sector undertaking and infrastructure investment trust in September. If we look at the options here, option A is right and B is right. C is wrong here. A is saying PSUs can now delist at a fixed price providing at least 15% above the floor price. Absolutely right. The new rule is applicable to banks, NBFCs, insurance companies where the government holds 90% or more stake. Absolutely right. C is saying SEBI has revised the infrastructure investment rate, that is your InvIT norms, reducing the minimum allotment in the primary market to 20 lakh rupees, and this is for the private InvITs. No, it has not been reduced to 20 lakh rupees but 25 lakh rupees. Right. Next is mention the saving account launched by Bank of Baroda in September for Indian citizens planning to move abroad for extended stays. So they have launched Bank of Baroda Inspire NRE saving account. Next, in September, which fintech company partnered with SIDBI to launch digital first Udyam generation through the Udyam Assist platform, aiming to facilitate the formalization of informal micro enterprise across the country? Which is the organization? It is PhonePe. Right? Take a note of it. Next, mention the financial institution which approved a loan of 212.64 million under the Strengthening Coastal Resilience and the Economy, that is SHORE project, to support coastal zone management in Tamil Nadu and Karnataka. So mention the financial institution that we are talking about. It is World Bank. Next,
Identify the financial institution that signed $126.4 million loan agreement with the Government of India in September for the Tehri Lake Area project in Uttarakhand under Sustainable, Inclusive and Climate Resilient Tourism Development Initiative. So identify the financial institution that signed this loan agreement. It is Asian Development Bank, ADB. Next, mention the company that signed a partnership agreement with French Alternative Energies and Atomic Energy Commission to accelerate innovation and industrialization of physical artificial intelligence powered solutions in France. So, mention that company. It is TCS, Tata Consultancy Services. Next, mention the name of the Indian filmmaker who became the first Indian woman by winning the Best Director Award in the Orizzonti section at the 82nd Venice International Film Festival held from 27th of August to 6th of September in Italy. So mention the name of that Indian filmmaker. Right option is Annapurna Roy. Right, and with this honor she became the first Indian woman to win the award in this section. Next, where was the 18th International Earth Science Olympiad held in August, in which Indian student team won 7 medals along with third prize in the International Geoscience Youth Movement Reporter category. So, right option is Jining, China. Next, who was posthumously conferred with P.V. Narasimha Rao Memorial Award for Economics for his contribution to economic transformation and nation building in India. So, right option is Dr. Manmohan Singh. Right, and he was honored posthumously here, means after his death, and his wife received, that is his wife Gursharan Kaur, she received the award on his behalf. Next, who was elected as the Thailand's 32nd Prime Minister, securing 311 votes in the parliament and succeeding the P. Shinawatra. So, who was elected here? Anutin Sharni Virakul, right, has been appointed as the 32nd Prime Minister of Thailand. Next, identify the country for which Mohammad Irfan Ali was re-elected as the President of the country in September 2025. So for Guyana, take a note of this. Next, till when the Government of India extended the tenure of Ajay Kumar Srivastav as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Indian Overseas Bank. So till 8th of October 2027 he has been appointed here, and he succeeded Partha Pratim Sengupta. Next, who was appointed as the chairperson of the Governing Board of National Stock Exchange of India by SEBI, succeeding Girish Chandra Chaturvedi. So right option is Injeti Srinivas, and he succeeds Girish Chandra Chaturvedi. Next, mention the person who became the youngest to be appointed as the new Prime Minister of France, succeeding François Bayrou in September 2025. So right option is Sébastien Lecornu, and he has became the youngest person ever to assume the office of the Prime Minister of France. Next, Jonas Gahr Store secured second consecutive term as the Prime Minister of which country? So is the Prime Minister of Norway. Next, former Governor of Maharashtra Chandrapuram Ponnuswamy, that is CP Radhakrishnan, was sworn in as the which president or which vice president of India, succeeding Jagdeep Dhankardji, who resigned recently. So he became the 15th vice president of India, right? CP Radhakrishnan ji. He is the former governor of Maharashtra. Next, identify the state for which Acharya Devvrat, the governor of Gujarat, was given additional charge as its governor by the President of India, Draupadi Murmu ma'am, in September. So identify that state. It is which state? It is Maharashtra. Next is our homework section, student. First question, who became the 15th Vice President of India and who he succeeded? Then second question, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Hero Motor Corp? Third question, tell me recently who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of International Asset Reconstruction Company. Fourth question, tell me recently who has been given the additional charge of the Governor of Maharashtra. I have given you a very big hint, students, in this, right? If you know the answer, you will be able to connect. Then fifth question, who has been recently appointed as the interim Prime Minister of Nepal, and why this is important, tell me that also.
Then sixth question, tell me recently who has assumed the charge as the director of All India Institute of Ayurveda. So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 24 सितंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भी विजिट पे थे टू अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। देन हम बात करेंगे CAG की एक रिपोर्ट रिलीज की गई, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी ने प्रिजाइड किया ओवर 51st फाउंडेशन डे ऑफ CPCB इन दिल्ली। देन एक MOU डिस्कस करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में साइन किया गया, ताकि पुराने स्टाइल से एक स्टिच शिप जो कि एक वुडन शिप रहेगा उसको बनाने का काम किया जाएगा INSV कौनिंदिया। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी अरुणाचल के विजिट पे थे एंड त्रिपुरा के विजिट पे थे 22 सितंबर को। तो सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स इनके द्वारा टोटल 5100 करोड़ के यहाँ पे लॉन्च किए गए। स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। इन्होंने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए। एक तो है हियो एंड टेटो 1। अगर हम बात करें हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये आपका 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहेगा। देन अगर हम बात करें टेटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, ये 186 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहेगा। इसी के अलावा तवांग डिस्ट्रिक्ट में इनके द्वारा एक तवांग कन्वेंशन सेंटर को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, जो कि आपका 1500 डेलीगेट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जिससे टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज के जो आपके नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, वो यहाँ पर कराए जा सकेंगे। पहली चीज। फिर जब ये विजिट पे थे त्रिपुरा में, इन्होंने त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को रीडेवलप करने का काम किया गया, उसके लिए प्रोजेक्ट अप्रूव किया। 524 ईयर ओल्ड ये आपका टेम्पल है। प्रसाद स्कीम के अंडर इसको यहाँ पे रीडेवलप किया जाएगा एंड एक्सपेक्टेड है कि इस रीडेवलपमेंट में 54 करोड़ रुपीस तक का खर्चा हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू जी। कैपिटल ईटानगर एंड यहीं पे हमें नामधापा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा भी रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द स्टेट फाइनेंसेस। 22-23 की रिपोर्ट है। 16 स्टेट यहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस हमें देखने को मिला। जितना वो खर्चा करते हैं, जितना उनकी अर्निंग होती है स्टेट की, वो देखें तो सरप्लस का मतलब अर्निंग ज्यादा है, आपका जो खर्चा है वो कम है। अगर डेफिसिट की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया कि खर्चा ज्यादा है एंड वो अर्निंग कम कर रहे हैं। यहीं पे अगर हम देखें रेवेन्यू हाईलाइट्स की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो ये आप कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो था 2,57,750 करोड़ रुपीस का, ये आपका टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें देखने को मिला था। वहीं पे अगर हम देखें किस स्टेट में रेवेन्यू सरप्लस रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्टेट रेवेन्यू सरप्लस थी, टॉप पर थी, वो थी यूपी ने यहाँ पे टॉप किया विद 37,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू सरप्लस इन F123। देन वहीं पे फॉलो इसके सेकंड पोजीशन पे गुजरात, देन ओडिशा, देन झारखंड, देन कर्नाटका एंड देन छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ये स्टेट्स भी यहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस देखने को मिली। वहीं पे रेवेन्यू डेफिसिट देखें तो 12 स्टेट्स यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट थी। ये वो स्टेट्स हैं आप जो देख सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट थी। आंध्र प्रदेश यहाँ पे टॉप करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए मूविंग ऑन। भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने प्रिजाइड किया 51st फाउंडेशन डे ऑफ CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनका काम क्या होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पॉल्यूशन पे रोक लगाएं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, राइट, चाहे वो किसी तरीके का पॉल्यूशन हो, हम कैसे उस पर रोक लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 51st फाउंडेशन डे था। परिवेश भवन यहाँ पर इसका इवेंट हुआ था। इसको प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनके द्वारा इसको प्रिजाइड किया गया। यहीं पे हम देखेंगे
समीर 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ये सेकेंड वर्जन है इस समीर एप्लीकेशन का। ये आपकी एप्लीकेशन बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आती है, एप्पल iOS पर भी आती है, एंड ये आपका लोकेशन सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी अब इसमें, एंड बेटर यहाँ पे इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसी के अलावा आप देखेंगे 2 रीजनल लैब्स यहाँ पे इनॉग्रेट की गई, एंड नई बिल्डिंग हमें देखने को मिलेगी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, राइट। इसके लिए फाउंडेशन स्टोन भी यहाँ पे ले डाउन किया गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, एक एमओयू हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया। ये एमओयू आपका एक वुडन शिप बनाने का एमओयू है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई वेल्डिंग नहीं होती थी शिप बनाने के लिए, राइट। वुडन को स्टिच करके, यहां पर हम स्टिच मतलब सलाई धागे से, सुई धागे से स्टिच करके नहीं, उसको अच्छे से अरेंज करके ये आपका स्टिच शिप बनाए जाते थे पहले। एंड उसी टेक्नोलॉजी को, एंशिएंट टेक्नोलॉजी को, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यहाँ पे रिवाइव करते हुए INSV कॉनिंडिया यहाँ पे ये शिप बनाया जाएगा। एंड इससे क्या होगा, हमारी जो क्राफ्टमैनशिप थी, ट्रेडिशनल मैरीटाइम स्किल्स जो होती थी, क्राफ्टमैनशिप थी, हमारा जो कल्चर था, उसको यहाँ पे रिवाइव हम करने का काम करेंगे। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ ये एमओयू साइन किया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम। ये बेसिकली क्या इनिशिएटिव है, यहाँ पे जो ट्राइबल यूथ है, राइट, उसको एम्पावर करने का काम किया जाएगा। उनके लिए यहाँ पे यूथ्स के लिए नए इनिशिएटिव्स आएंगे, राइट। एंड इसी के हम देखेंगे 12 महीने का ये आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें आदि युवा फेलोशिप की, तो ये आदि युवा फेलोशिप 12 महीने की फेलोशिप रहेगी, जहाँ पे जो ट्राइबल यूथ्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किलिंग दी जाएगी, उनकी लर्निंग की जाएगी, उनके करियर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। एंड पहले 16 फेलोज को सेलेक्ट किया जाएगा, जिनको यूएन एजेंसीज के साथ प्लेस किया जाएगा एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। वहीं पे अगर हम बात करें आदि कर्म योगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम की, राइट, यहाँ पे इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। एंड इनके द्वारा अभी तक 82 वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया गया 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान 2 महीने के लिए, ताकि 2030 की जो विलेज विजन प्लानिंग है इन स्टेट्स की, उसके ऊपर काम किया जा सके। ठीक है, तो इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एंड यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलकर ये आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्म योगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। इनके द्वारा मैत्री 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ताकि एग्रीकल्चर इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके। ये बेसिकली क्या है, मैत्री, यहाँ पे इंडिया एंड ब्राजील ये दोनों मिलके एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने का काम करेंगे। कैसे? टेक्नोलॉजी की मदद से। क्या टेक्नोलॉजी? आज के टाइम पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सैटेलाइट से क्या आता है, डाटा आता है। डाटा को अगर हम AI को फेड करें, मशीन लर्निंग को फेड करें, या फिर वेरियस टूल्स की मदद से अगर हम उसका एनालिसिस करें, तो हमें काफी मीनिंगफुल आउटपुट निकलता है, जिससे फार्मर्स को काफी बेनिफिट मिलता है डिसीजन लेने में। यहीं पे फिर हम देखें UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनको हम ड्रोन्स भी कह देते हैं, ये बहुत सारा यूज हो रहे हैं आज के टाइम पे स्प्रेइंग के लिए, राइट, मॉनिटरिंग के लिए, क्रॉप कटिंग के लिए। तो इस सेक्टर में इसका बहुत यूज देखने को मिलता है। करेक्ट। इवन सैटेलाइट के डाटा से हम वेदर फॉरकास्ट करने में भी बहुत हेल्प मिलती है, जिससे फार्मर्स पहले से ही प्लान कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को, कब हार्वेस्ट करना है, कब उसको सोना है, बो करना है, तो एवरीथिंग, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे आप मार्क करके चलेंगे। इससे क्या है, ये मैत्री 2.0 है, ये नए सेकंड वर्जन ऑफ दिस। जो पहला इनिशिएटिव था 2019 में लॉन्च किया था, एंड ICAR के द्वारा भी सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर इनोवेशन के ऊपर काम करने के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। 2025 का CSAR एडिशन हमें देखने को मिला। कहां पर? प्रिटोरिया में हुआ, साउथ अफ्रीका में। CSAR क्या है? चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल, राइट। साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी है इनके पास, एंड इन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। 2 डे कॉन्फ्रेंस था, हेल्ड अंडर द थीम इक्विटी बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, या ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, राइट। यहाँ पे याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि कहां पर हुआ, लोकेशन, वो है प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिला था। एंड यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की तरफ से किस इंडिया को डेलीगेट किया, फिर इंडिया की डेलीगेशन को लीड किसके द्वारा किया गया, तो वो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी के द्वारा, राइट। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है टू
द प्राइम मिनिस्टर। यहीं पे याद रखेंगे। फिर एक और चीज, 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। यूनेस्को इनका नॉलेज पार्टनर है। एंड क्या काम क्या है बेसिकली कि साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं CSIR का आर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इनके द्वारा वर्चुअली पार्टिसिपेट किया गया साइंस समिट 2025 में, जो कि 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान हुई थी न्यूयॉर्क USA में। राइट, मार्क करेंगे। आई रिपीट, CSIR के आर्म NI जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया 80वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इवेंट में, जो कि न्यूयॉर्क USA में हुआ। इसकी थीम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ड्राइविंग जेंडर इंक्लूसिव इनोवेशन, जेंडर इक्वालिटी, ब्रेकिंग बैरियर्स। राइट, एंड अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या एम था, क्या मोटो था इस इवेंट का, ये था कि हम कैसे वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम इक्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे वीमेन्स का पार्टिसिपेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम कोर्सेज में हम बढ़ावा दे सकते हैं। राइट, ये मेन एम था कि वीमेन का हम स्टेम सेक्टर में कैसे पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करें, क्योंकि अगर अभी हम देखें ग्लोबली 35% ऑफ द जो प्रोफेशनल्स होते हैं वीमेन, वो स्टेम फील्ड्स में। हम इस डाटा को और बढ़ाना चाहते हैं, इक्वालिटी की तरफ हम इनको ले जाना चाहते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस में। आरबीआई ने कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है। इनकी इरेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस जो थी, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल इनकी कुछ एप्स थी, किन कैश, दो लोन, जेस्ट कैश, तो इन पे इरेगुलर लेंडिंग पैटर्न्स देखने को मिले, जिससे इनका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे कैंसिल होता हुआ दिखा है। मूविंग ऑन, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। 1 से लेके 10,000 रुपए तक का आप वाउचर्स बाय कर सकते हो। ये वाउचर्स आप यूपीआई पेमेंट करके कर सकते हो, एंड कितने भी वाउचर्स आप बाय कर सकते हो। लिमिट क्या रहेगी कि आपकी जो डेली यूपीआई लिमिट है उससे ज़्यादा आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, राइट। एंड कितने ही इनके 1 से 10,000 तक का आप वाउचर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। एंड ये कहाँ से बाय कर पाएंगे? बॉब ई पे यूपीआई एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे बाय कर पाएंगे, करेक्ट। एंड यहाँ पर बॉब ई जो लॉन्च किया गया वो क्या है? ई रूपी P2P डिजिटल गिफ्टिंग। P2P क्या है? पीयर टू पीयर, राइट, मतलब एक दूसरे को आप यहाँ पे गिफ्ट कर पाएंगे ये वाउचर्स, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला SIF विद इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, राइट। SIF क्या है? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, राइट, लॉन्ग शॉर्ट फंड रहेगा ये। एंड 10 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। इसका जो NFO पीरियड है, न्यू फंड ऑफर पीरियड, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा। एंड ये निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा रिलीज किया गया ऑल इंडिया CPI वैल्यूज फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबर्स का फॉर अगस्त मंथ। डायरेक्ट इस डाटा को ही याद रखेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर लेबर्स तो CPI इंडेक्स क्या है? 136.34। वहीं पे अगर हम बात करें रूरल लेबर्स का वो है 136.6। अगर हम बात करें, ये तो है CPI इंडेक्स। फिर अगर बात करें इन्फ्लेशन से रिलेटेड तो एग्रीकल्चर लेबर में जो इन्फ्लेशन है 1.07% एंड रूरल लेबर्स में 1.26% का हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इनके द्वारा $62.44 मिलियन की एक डील साइन हुई कास्टन रेंडर के साथ, ताकि 4 हाइब्रिड मल्टीपर्पज वेसल्स को बनाया जा सके। देखो एक चीज समझो ये स्टूडेंट्स, इंडिया में ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमारी जो इन हाउस डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो पूरी होगी पहले। फिर पूरी होने के बाद जो एक्सेस गुड्स हैं हम उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें प्रॉपर पोर्ट्स चाहिए, एक प्रॉपर मैरीटाइम इकोसिस्टम चाहिए, राइट। उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए, उस पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, राइट, नए शिप्स को बनाने के लिए, सेलिंग वेसल्स को बनाने के लिए, एंड डिफेंस सेक्टर में अगर हम देखें तो इंडियन नेवल शिप्स को बनाने के लिए, राइट, क्योंकि अगर हम ये पोर्ट्स जाएंगे तो हमारा इकोसिस्टम डिफेंस सेक्टर भी स्ट्रांग होना चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो ये कंसेप्ट से हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे आपने भी नोटिस किया होगा, काफी दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको ग्रो करने का काम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं पोर्ट्स के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे नए नए इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, राइट, नई नई डील साइन होती हुई हमें दिख रही हैं। एंड सारा रीजन क्या है कि हम अब एक
मैन्युफैक्चरिंग हम अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे हमें अब प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए जिससे हम एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दे सकें। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर आते हैं। 69th बैलन डियोर अवार्ड अभी हम के द्वारा देखे गए। कहां पर हुए थे ये बैलन डियोर अवार्ड? 69th एडिशन ऑफ दिस बैलन डियोर अवार्ड्स ये पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिले। राइट, मेंस कैटेगरी में आप यहां पे देख सकते हैं किन्होंने जीता ये मेंस कैटेगरी में बैलन डियोर अवार्ड। ये है पीएसजी क्लब होता है फुटबॉल का, पेरिस सेंट जर्मेन क्लब। इनके फॉरवर्ड प्लेयर डेम्बली, इनके द्वारा मेंस कैटेगरी में बैलन डियोर अवार्ड जीता गया। अगर मैं वीमेंस कैटेगरी की बात करूं तो यहां पे वीमेंस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बार्सिलोना की प्लेयर, बार्सिलोना क्लब है, इनकी प्लेयर बॉनमाती, आप यहां पे लेफ्ट में देख सकते हैं, इनके द्वारा जीता गया। एंड दिस इज फॉर द थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टाइम, तीसरी बार लगातार इनके द्वारा यहां पे बैलन डियोर अवार्ड जीता गया है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, यहां पर आप बाकी कुछ और अवार्ड्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। पीईएसबी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड पैनल ने रिकमेंड किया बी साईराम को एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना पीएसयू है, एंड ये रिप्लेस करेंगे पीएम प्रसाद जी को। नेक्स्ट पे आते हैं पीरामल एंटरप्राइज। इन्होंने कंप्लीट किया अपना मर्जर विद पीरामल फाइनेंस। 23 सितंबर को ये पूरा हो जाएगा एंड ये रिकॉर्ड डेट है जहां पे पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर विल सीज ट्रेडिंग एंड ये एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो है ऑफ पीएफएल पीरामल फाइनेंस लिमिटेड उनको 1+1 का शेयर बेसिस पे मिलेगा। 1:1 में, मतलब एक शेयर और यहां पे मिलता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट जोरावर लाइट टैंक, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये लाइट टैंक है। राइट, 2027 तक ये इंडियन आर्मी में कमीशन हो जाएगा। अभी इसको डिलीवर किया गया है इंडियन आर्मी को, इसकी टेस्टिंग होगी अभी। इसको डीआरडीओ एंड एलएनटी के द्वारा मिलकर बनाया गया है। डीआरडीओ का आर्म सीवीआरडीई एंड एलएनटी के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया है। इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। 25 टन का ये टैंक रहेगा, 70 किलोमीटर आवर तक की इसकी स्पीड रहेगी एंड 2027 तक ये ऑपरेशन में आता हुआ हमें दिखेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। टीम वर्ल्ड ने अभी लेवर कप जीत लिया है टीम यूरोप को हरा के। देखो ये जो लेवर कप होता है ना, ये टेनिस में होता है, सबसे पहली चीज ये याद रखेंगे। एंड चौथी बार ये खेला गया है, जिसमें से 3 बार टीम वर्ल्ड के द्वारा इसको जीता गया, और इस बार भी टीम वर्ल्ड ने जीता टीम यूरोप को हरा के। 2 ही टीम होती है, टीम वर्ल्ड एंड टीम यूरोप लेवर कप की। इस बार कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हमें देखने को मिला था एंड ये इसका 3rd टाइटल विन है इन 4 ईयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कैंसर पेशेंट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनके केयर गिवर्स के लिए, जो लोग ठीक हो गए हैं एंड जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को। एंड मेलिंडा रोस, ये एक 12 साल की लड़की थी जिनको कैंसर हो गया था एंड फिर 1996 में इनका निधन हो गया। इनको ध्यान में रखते हुए, इनको सम्मानित करते हुए, ये काफ़ी पॉजिटिव रही थी एंड इन्होंने काफ़ी राइटिंग्स की थी बिफोर शी पास्ड अवे। राइट, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जागरूकता फैलाई थी एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया था लोगों को जो कैंसर से जूझ रहे हैं। सो इनको ऑनर करते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड रोज डे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। राइनोज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। एक स्पीशीज होती है इनकी जवान राइनोज, वो सिर्फ 70 बचे हुए हैं। राइट, अगर हम देखें तो सिर्फ 5 स्पीशीज ऑफ राइनोज बची हैं, 2 अफ्रीका में एंड 3 एशिया में हमें देखने को मिलती हैं। राइट, एंड ओरिजिन देखें तो वर्ल्ड राइनो डे को 2010 में ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा साउथ अफ्रीका में, एंड राइनो के कंजर्वेशन के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड कार फ्री डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स हम वर्ल्ड कार फ्री डे। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम कार, राइट, बाइक्स, इनको छोड़ के हम साइकिलिंग के ऊपर ध्यान दें, सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान दें, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिखेगी। तो वर्ल्ड कार फ्री डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पे यूरोपियन मोबिलिटी वीक की बात करें तो 16 से 22 सितंबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर आ जाते हैं जस्टिस पवन कुमार बिमप्पा। इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एंड इनकी ओथ एडमिनिस्टर किनके द्वारा की गई? आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा। ये सक्सीड करेंगे विपुल मनुभाई पंचोली को। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखेगी। मेंशन दैट कंट्री, जहां पे इंडिया ने एक एमओयू साइन किया जो लेवरेज करेगा कॉम्प्लीमेंट्रीज बिटवीन द 2 इकोनॉमीज अनाउंस्ड बाय द ऑन द साइडलाइंस ऑफ फिकी लीड्स, जो कि न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला। तो किस कंट्री ने ये अभी रिसेंटली इंडिया के साथ साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? वो है मैक्सिको के साथ। नेक्स्ट, मेंशन द वर्ल्ड का पहला
ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन, 10 वीमेन का ये एक्सपीडिशन है जिसमें से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। इंडियन आर्मी से 5, इंडियन नेवी से 1 एंड इंडियन एयरफोर्स से 4 वीमेन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। नाम पूछा गया है इस एक्सपीडिशन का, यह है समुद्र प्रदक्षिणा। कौन सा वेसल यहाँ पे यूज किया जाएगा, उसका नाम है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, जो कि है त्रिवेणी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंपनी जिन्होंने एक एमओयू साइन किया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ अंडर MEITY टू एक्सेलरेट द क्रिएशन ऑफ इंडिया के सॉवरेन क्लाउड इकोसिस्टम का, तो वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मिजोरम इन सितंबर। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अराउंड 8,500 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग विजिट टू मणिपुर इन सितंबर। यहीं पे देखें तो इनके द्वारा ईमा मार्केट, जिसको हम बोलते हैं मदर मार्केट, वो लॉन्च किया गया। देन एक IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई वर्थ 114 करोड़ रुपीज, और ये ईमा मार्केट 24 करोड़ की लागत से स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर ज्ञान भरतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज इन सितंबर। यहाँ पे एम क्या रहेगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें, राइट, उनको स्टोर कर सकें। किसके द्वारा करा गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, राइट। यहीं पे ज्ञान सेतु, ये एक AI इनोवेशन चैलेंज भी लॉन्च किया गया था अंडर दिस ज्ञान भरतम मीट, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट आर इंक्लूडेड अंडर इंडियाज एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ ओपियम पॉपी कल्टीवेशन के लिए, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी टिल 30 सितंबर 2026 तक फॉर क्रॉप ईयर 26 FY26 के लिए। तो मेंशन दैट स्टेट जहां पे ये इनिशिएटिव लॉन्च की गई जिससे फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड UP में। नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट्स फॉर FY26 एज पर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन सितंबर। तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट्स की, वो है 1 लाख करोड़। इससे इंडिया का डिफेंस सेक्टर यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, नए यहाँ पे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज हमें यूज होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट, किन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया एट द 44th मीटिंग ऑफ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर काउंसिल में, जो कि किर्गिस्तान में हमें देखने को मिली। तो इंडिया से किन्होंने लीड किया, TV रविचंद्रन जी के द्वारा यहाँ पे लीड किया गया इंडिया को। देन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द 9th एडिशन ऑफ जैपेड एक्सरसाइज, जो कि एक रशिया बेलारूस की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। बेलारूस में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की ऑफिशियल विजिट टू UAE। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन से ऑप्शंस यहाँ पर आपके सही रहेंगे, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर डिड द 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट देखने को मिली, जहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया एंड ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। तो ये इटली में हमें देखने को मिली, ये था 4th एडिशन। अगर पूछा जाए 5th एडिशन तो इंडिया होस्ट करेगा, 2027 में होस्ट करेंगे हम इसको, एंड इंडिया में भी चेन्नई तमिलनाडु में ये हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आपको फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स जो कि लॉन्च किए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा एट द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, जो कि दुबई UAE में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी गलत है। बी कह रहा है कि UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट इसको डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन NIPL एंड UPU के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है। अब ऑप्शन बी सही है। सी कह रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया $20 मिलियन का कमिटमेंट टू फॉस्टर इनोवेशन इन द ई-कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स एट द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। तो नहीं, $20 मिलियन का कमिटमेंट नहीं है, ये $10 मिलियन का कमिटमेंट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल रिलैक्सेशंस बाय सेबी फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन सितंबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, आई करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है तो ऑप्शन ए और बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि सेबी ने रिवाइज किया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नॉर्म्स को, रिड्यूसिंग द मिनिमम अलॉटमेंट इन द प्राइमरी मार्केट टू 20 लाख रुपीज, तो 20 नहीं 25 लाख रुपीज। मूविंग ऑन, मेंशन द सेविंग अकाउंट जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया इन सितंबर फॉर इंडियन सिटीजन प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड स्टेज। तो यहाँ पे कौन सा प्लान है, वो है BOB एस्पायर NRE सेविंग अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस फिनटेक कंपनी ने पार्टनर किया सिडबी के साथ टू लॉन्च डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन थ्रू द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म एमिंग टू फैसिलिटेट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो है फोन पे के साथ, इन्होंने फोन पे के द्वारा ये लॉन्च किया गया सिडबी के साथ मिलकर। नेक्स्ट, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने अप्रूव किया लोन ऑफ $212.64 मिलियन ताकि जो कोस्टल एरियाज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके अंडर शोर प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली कहां पर, तमिलनाडु में एंड कर्नाटका में। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक। फिर इसके बाद आ जाते हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने $126.4 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि टेहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में डेवलप किया जा सके, उसके ऊपर काम किया जा सके, उसको सस्टेनेबली इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंडर काम के अंडर लाया जा सके। तो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने कभी पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया फ्रेंच ऑल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ ताकि एक्सेलरेट कर सके इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पावर्ड सॉल्यूशंस को फ्रांस में। फिजिकल एआई मतलब रोबोट्स, जहां पे रोबोट्स को एआई के साथ लाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन फिल्म मेकर जो कि पहली इंडियन वीमेन बनी बाय विनिंग द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द ओरिजिनोटी सेक्शन और एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 27 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक हुआ इटली में। तो कौन है, वो है अन्नपूर्णा रॉय, एंड ये पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हुआ अगस्त के महीने में, जहां पे इंडियन स्टूडेंट टीम ने 7 मेडल जीते अलॉन्ग विद 3rd प्राइज इन द इंटरनेशनल जियोसाइंस यूथ मूवमेंट रिपोर्टर कैटेगरी में। तो ये जिनिंग चाइना में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, किनको पोस्ट ह्यूमसली पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एंड इनकी वाइफ गुरशरण कौर जी के द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया ऑन हिज बिहाफ। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द थाईलैंड्स 32nd प्राइम मिनिस्टर, कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अनुतिन चरनी विराकुल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री फॉर विच मोहम्मद इरफान अली इनको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये गायना के अपॉइंट किए गए थे, रीइलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ अजय कुमार श्रीवास्तव एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो 8 अक्टूबर 2027 तक इनका टर्म यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। प्राथा प्रीतम सेन गुप्ता को ये सक्सीड करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, इन सितंबर किनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बाय सेबी, सक्सीडिंग गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो इंजेटी श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया यहाँ पर चेयरपर्सन ऑफ एनएसई एंड ये सक्सीड करेंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। नेक्स्ट, मेंशन द पर्सन हु बिकेम द यंगेस्ट टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, सक्सीडिंग फ्रांसकोइस बेरू इन सितंबर। तो कौन है वो है सेबेस्टियन लेकॉर्नो एंड ये यंगेस्ट पर्सन बने जो होल्ड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इन फ्रांस। नेक्स्ट, जॉनस गार स्टोर, इन्होंने सिक्योर किया 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का, तो ये नॉर्वे के बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन जी, ये 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के एंड ये फॉर्मर गवर्नर थे महाराष्ट्र के। ये सक्सीड करेंगे जगदीप धनखड़ जी को जिन्होंने भी रिसेंटली रिजाइन कर दिया था साइटिंग हेल्थ कंसर्न्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट फॉर विच आचार्य देवव्रत जो कि गवर्नर हैं गुजरात के, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज इट्स गवर्नर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो आइडेंटिफाई द स्टेट फॉर विच आचार्य देवव्रत ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, राइट। तो ये कहाँ के बन गए हैं, राइट। तो बताओ आइडेंटिफाई द स्टेट, कौन सी स्टेट है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे वो कौन बन गए हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं 15वें। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक फॉर विच रवि रंजन इनको रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय एफएसआईबी, सक्सीडिंग विनय एम थॉमसे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किन हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन एंड द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जिनको अपॉइंट किया गया इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, कौन अपॉइंट की गई है, वो है सुशीला कर्की। नेक्स्ट, मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर विच एसीसी इन्होंने अपॉइंट किया एल सत्य श्रीनिवास को एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहाँ का, ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए फॉर इंडिया एंड ये सक्सीड कर रहे हैं किनको, विकासशील को। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट बिल्ड द 11th एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज, करेक्ट, लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन थाने। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये पूछा जा रहा है, यह सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा।
Moving on, where did Indian Navy commission its new naval-based facility named INS अरावली? तो अरावली ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये गुरुग्राम हरियाणा से स्टार्ट हो जाती हैं, राइट? यहीं पे आपको लेपर्ड ट्रेल देखने को मिलता है, यहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है, तो ये एरिया बहुत ग्रो करेगा नियर टू SPR. तो INS अरावली करेक्ट. ये कहाँ पे कमीशन किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में करा गया. नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट बिल्ड एंड्रॉथ सेकंड ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जो कि रिसीव किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा. तो उस कंपनी का नाम बताओ. वो है GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. इनके द्वारा ये एंड्रॉथ, जो कि सेकंड ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रहेगा. Next is our homework section, student. First question: who became the 15th Vice President of India and who he succeeded? Then second question: who has been appointed as the Chief Executive Officer of Hero Motor Corp? Third question: tell me recently who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of International Asset Reconstruction Company. Fourth question: tell me recently who has been given the additional charge of the Governor of Maharashtra. I have given you a very big hint, students, in this, right? If you know the answer, you will be able to connect. Then fifth question: who has been recently appointed as the interim Prime Minister of Nepal and why this is important? Tell me that also. Then sixth question: tell me recently who has assumed the charge as the Director of All India Institute of Ayurveda. So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.